concepts look up. So basically, the first thing which we are looking here is the digital headlines. That July 2023 report, according to the Hootsuite, is saying that there are 8.05 billion people are there on the planet Earth. So our total population is beyond 8 billion as of July 2023. Now we are 5 to 6 months running beyond this time. So maybe कुछ मर गए होंगे, maybe कुछ और पैदा हुए होंगे. So probably the count would be around 8 billion. So उसमें से इंटरनेट यूजर्स कितने हैं? इट्स 5.19 बिलियन. बट यूनिक मोबाइल फोन यूजर्स कितने हैं? तो वो है 5.56 बिलियन. ऑलमोस्ट 69% पीपल आर यूजिंग मोबाइल फोन्स. अभी ये काउंट ऐसा क्यों है? क्योंकि वी हैव द बेसिक फोन्स which which are not connected to internet. That's why we have 5.56 billion. This count is for using the which uh, who is using the mobile phones, but only 5.19 billion people are connected to the internet. So, so the people, 5.19 billion people who are connected with the internet are not all the phone users. There might be a few users like students. So generally, at least मैं जब तक स्कूल में था तब तक तो students were not allowed to use mobile phones at least till 10th standard. So, but students were allowed to use internet when they were in the school, or maybe किसी घर के पास internet connection होता था. आज तो सबके पास ही है. So that's why there is a gap between these two users. And then we have 4.88 billion people, that is 60% of our total population, who is using the social media. Now, the social media has more than this count. Like Facebook is claiming that Facebook, WhatsApp, Instagram all together has more than 2.5 billion people. Then there is a large number of audience from Russia and China. They are not allowed to use this kind of social medias like WhatsApp, Facebook, and Instagram because it's banned in those countries. And the China has the highest population uh, in the world. So they are using the alternate sources like WeChat. Then they have some alternate like YouTube and so on. So the social media, the users, according to this Hootsuite, which is a global surveying agency, basically, according to their data, 4.88 billion, that is more than 60% people are connected to social media. So this is the data. So it is important that basically more than 60% people are using internet. So ऑब्वियसली ये मैंडेटरी है कि आप सब लोगों को एटलीस्ट एक वेब पेज फॉर्म करना तो आना चाहिए. देन देर आर सो मेनी थिंग्स कि वेब एप्लीकेशंस बनाओ, फोन एप्लीकेशंस बनाओ. देर आर सो मेनी थिंग्स कि आप यहाँ से इजीली यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन गेट पेड फॉर दिस थिंग. सो ये अंडरस्टैंडिंग पहले होना कि मैं ये क्यों सीख रहा हूँ. दिस इज इम्पोर्टेंट. सो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि ये एक स्लाइड हम इंक्लूड करते हैं. देन द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया. ये स्लाइड दिख रहा है भावेश सबको? Yes, sir. ओके. सो व्हाट इज द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया? दैट इज, जब एयरलाइंस आए थे ना, जब भी एयरलाइंस की शुरुआत हुई, so when they started, at that time, weeks taken to reach 10 lakh people. 10 lakh is in 1 million. 1 मिलियन लोगों तक एयरलाइन, ये कंसेप्ट पहुंचने के लिए 64 वीक्स का टाइम लगा था. तो आप अभी देख लो कितने साल लगे थे इसका मतलब. सो इट्स मोर देन 1 ईयर, दैट इज. सो देन ऑटोमोबाइल्स, मतलब जब गाड़ियां चलने लगी, तो ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट 10 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए 62 वीक्स का टाइम लगा था. तो
देन टेलीफोन्स पहुंचने तक टेलीफोन का कंसेप्ट क्या है ये जानने के लिए 50 वीक्स, 46 वीक्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड फॉर 28 वीक्स, एंड सो ऑन. So if you see, if you look at these numbers, there is a huge gap between the computers and Pokemon Go game. तो कंप्यूटर्स को 10 बिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 14 वीक्स लगे थे. एंड देन वी चैट, मतलब जो व्हाट्सएप के बाद आया हुआ ऐप था वी चैट, उन्होंने बहुत कुछ मार्केटिंग करने की कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फेल हुआ. बट इसको 10 मिलियन लोगों के फोन में इंस्टॉल होने के लिए सिर्फ 1 वीक लगा था. एंड देन द पोकेमोन का जो गेम आया था सबको पता ही होगा, दैट वाज इंस्टॉल्ड एंड दे हैड more than 1 million active users within just 90 days. So this is the power of digital media. अगर इंटरनेट आप सही यूज करना जानते हो तो there are in coming days there would be some site who can able to acquire more than 1 million people might be in few hours. So that's the power of digital media. But आपका application अच्छा होना चाहिए, that is important. So the next slide is how internet works. So इंटरनेट क्या है पहले जान लेते हैं. आपको सबको पता ही होगा बट स्टिल अगर कोई गैप्स है तो प्लीज क्लैरिफाई दिस. सपोज समवन हैज अ क्वेश्चंस, कोई किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन रेज हैंड्स. यहाँ पे सबको दिख रहा है ना, जूम में रेज हैंड का ऑप्शन इज देयर, राइट? सो there are so many computers or nowadays in the field of technology, we say that these are the nodes which are connected to internet. Like phone hai jo wi-fi se connected hai to my router, then my laptop which is connected to the router by wi-fi. That's why these signs are there which are representing this both the devices or both the nodes are connected to the wi-fi router using wireless technologies. But these machines, these two PCs, this one workstation and the printer, these four nodes are connected using the Ethernet, that is via LAN cables. So, anyways, these six nodes are connected to the one router. So, they form a local area network, which is LAN. This concept is clear to you, or should I explain on the LAN? Is it clear? Anyone has doubt on the LAN? Okay, I'm assuming that no one has doubt on the LAN. So, and this one router is connected to the internet via ISP. Anyone knows what is the full form of ISP? Anyone? So ISP is Internet Service Provider. जो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन लेके आता है, लाइक सबके पास शायद डिवॉइस एसएसडी होगा या फिर आयन होगा, 5 नेट होगा, या जो भी है. देर आर सेवरल इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. सो उनके ऑफिस में एक बहुत हाई कैपेसिटी का सर्वर रहता है. सो when they connect a fiber to our homes or our Wi-Fi routers, at that time that fiber has higher bandwidth, maybe more than 1 Gbps, that is 1 gigabit per second. तो like 1 GB डेटा एक सेकंड में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो सकता है. दिस इज द bandwidth between the ISP's server, that is their local computer, and between your router. So that is the bandwidth of the connection. But उसमें से, so ISP server is connected to the internet, but that line has the limited bandwidth. So that is why maybe the plans are maybe up to 100 Mbps. So if you start pinging up the speed, checking the speed of the internet connections you have available, it might be fluctuating in India, but I saw that in Americas it's a stable connection. And now if someone is using Geo fiber, you might you might can experience a stable connection. Suppose if you test it on speedtest.net, you will be able to find that the speedometer is getting up to the 30-50 Mbps, or it might be beyond 100 Mbps, and it is not coming back while the test. So that it represents that the connection is stable. So uh, so now in Indian infrastructure, Indian network infrastructure, we have the very stable connections in between the ISP modems and the routers.
but there is a problem with the ISP's connection with the internet. So their main lines are not that uh, good, uh, or the connection ratio is might be more than 1:8. So what is connection ratio? That means there is a one line. So suppose this cloud is representing a internet, and suppose this main line is coming to the ISP's office, which is further connected to the many routers. Here I am representing just one router, but suppose if this line is connected to many routers, then this one connection is sharing with so many routers. So the basically the market standard is 1:8. That is, one line is coming to ISP office, and then it's splitting it up to 8 offices. It means suppose we have the device SSV, or might be a ION internet connection available at this location. So ION is available even at New Panvel, even at Khanda Colony, Panvel, Karzat, Uran, and so on. So one line which is connected to the main server of the ISP, which is connected to the 5 locations. So that is already splitting the main bandwidth line is getting split with 1:8 ratio. And the one which is coming to this Panvel office, which is coming and which is connected to this ISP modem, it is connected to then n number of devices. So that's why suppose this uplink connection is 1 Gbps, it is getting further divided just like a water pipes. So is it clear to all? Hello, Yes, sir. is it clear? Okay, Yes. fine. इसमें से कुछ किसी को कुछ डाउट है? Okay, I'm assuming that there is no doubt. अभी ये चीज शायद सबको पता नहीं होगा कि when we put www.com, sorry, www.google.com to our web browser, तो ये होता कैसा है? मतलब google.com डालो तो गूगल का ही पेज आ रहा है. सपोज इफ आई एंटर facebook.com, तो फेसबुक का ही होम पेज आ रहा है, एंड सो ऑन. तो ये होता कैसा है? हाउ इट वर्क्स बेसिकली. सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो हमने देखा ये क्या है, हाउ इट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. बट यहाँ से अभी ये इंटरनेट है. सो इंटरनेट सबके पास है, मतलब फेसबुक के पास भी बैंडविड्थ है, गूगल के पास भी बैंडविड्थ है, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी बैंडविड्थ है. सो सपोज इफ यू वांट टू होस्ट योर वेबसाइट एज एट योर सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस, इट इज पॉसिबल बिकॉज द मेन पाइप, मेन टंकी वहां पे लगा है ना, वहां से हमारे घर में पानी आ रहा है. सो वी जस्ट हैव अ स्मॉल पाइप लाइक ½ इंच और 1 इंच. बट मेन जो बहुत बड़ा पाइपलाइन है जो हम रोड पे देखते हैं, उसका एक छोटा लाइन तो हमारे आईएसपी के ऑफिस में है. तो इफ वी कीप अ गुड होस्टिंग सर्वर एट आवर आईएसपी's ऑफिस, देन वी कैन इजीली होस्ट अ वेबसाइट एंड विच कैन बी अवेलेबल. वैसे तो हमारे घर में जो इंटरनेट कनेक्शन आता है, वहां पे अगर हम स्टैटिक आईपी ले सकते हैं, तो देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं से भी, मतलब आपके आपके खुद के लैपटॉप में अगर एक वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हैं, और उसको उसका अगर डीएनएस पाथ अगर आप प्रॉपरली सेट कर रहे हैं, so it is also possible to host a website at your home as well. But at that time, your internet connection can able to share a load. Suppose वो वेबसाइट पे के ऊपर अगर बहुत ट्रैफिक आ रहा है, so your internet connection is just like 30 Mbps. So there is no point hosting. And even if the 30 concurrent connections are being or even pinging up your PCs, then your PC should be in the state कि वो 30 concurrent users को seamlessly support करे. So our processors, our RAMs, our operating systems are not up to the mark because वो उसके लिए बना ही नहीं है. So that's why we are hosting our websites at such a place where the infrastructure is there. Means what? There is a stable internet connection. There is a good amount of, or maybe a good quantity infrastructure is available. Like they might have a RAM capacity more than 128 GB, or it might be beyond it. Then they might have a processor's capacity. I'm talking in terms of cloud infrastructure, because today the cloud is allowed. So
cloud infrastructure allows us to choose how many processors you want, how much number of the RAM you want, how much amount of the bandwidth is required to you, and we can configure accordingly, and we can host our virtual machine. So this word is very important, virtual machine. So the real server, point number 12, it might be a virtual machine or it might be a physical machine. There is always physical machine, but what we can do is we can host number of virtual machines in one physical machine. So when we say ki uh, I have rented out a hosting server from bluehost.com, or might be a bigrock.com, or it might be Amazon AWS services. So in so the basic server always comes with a V server, that is virtual server. So it's not a virtual host. Please do not get confused. It's a virtual server, not virtual host. Virtual host concept is different. So our websites, we can host number of websites in that one virtual machine, which is a part of one physical machine, which is here in the point number 12. So uh, I'm explaining all of this thing. So number one is this laptop. So when we enter www.mypage.com, or it might be a just mypage.com and hitting enter, at that time what happens is, पहले this laptop, when we enter this address into our web browser, at that time this laptop will ask its own OS cache. So now, are you familiar with the word cache, or should I explain it? Anyone has doubt with the cache? Okay, I'm assuming that the concept regarding the cache is clear to all. Okay, so there are three kind of caches. One is local cache, second is OS cache. This two caches are there in your own machines, and then there is a router cache. So local cache means a cache memory available in the browser. Suppose if you are visiting one page again and again, then there are high chances that you are browsering caching up that page as it is in your browser cache. Then there are OS caches, that is operating system level का एक cache रहता है, वहाँ पे भी कुछ चीजें रह सकती है. For example, suppose uh, if we make one website live, or if we publish one website on specific domain name, that is, suppose this mypage.com is a website which we have created and we have published it live, and we have connected this domain name with our hosting server, and we set up all the things, and suppose the website is live. So once we publish that website, in next 1 or 2 hours, you might face that some of the machines can able to resolve that website and some might not be. It is possible just because of your OS cache. So your OS is not familiar with this domain mypage.com. Or there is second scenario, that suppose if I'm changing that web page. So suppose if I'm updating that web page and I'm uploading it on the web server, then there are high chances that suppose if someone is refreshing that page again and again, he might not receive or obtain a updated copy of that page. That is happening just because of this OS cache. That means a domain uh, always has one IP address. So when I'm entering mypage.com, it is pointing to this server. Now, how to resolve this server, or how to resolve means to reach this server, find and reach. That is the real meaning of resolution. So when this website is hosted on this server and my browser is asking mypage.com, and suppose if it is at this server, then there is a lot of process going on. वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, and then it will reach to the real server, and वहां से फिर वो website आपके browser पे download होगा. So I'll have to explain entire process. So वो पहले अपने OS नहीं तो router cache के साथ interact करेगा. It will ask whether this mypage.com is available or at any of these three caches. Suppose it says yes, it is available in the cache. वो cache से retrieve करके browser को दे देगा and browser will load it.
That's why it's a local cache. When we clear a local cache and refresh, it can easily update the new page. So that's why this cache is important. Suppose if we are visiting a website which we haven't visited uh, in the lifetime of this PC. So in that case, cache will say, no, I do not have this file. In that case, it will go to this DNS resolver via ISP. ISP means Internet Service Provider, and it will go beyond its ISP's local network, and it will ask, भाई इसको कैसे लोड करेंगे? So this .com now, this domain is mypage.com. So any website, suppose this mypage.in, mypage.org, mypage.net.com, any website has one dot which is available after this .com, but which is not visible in the browser. So we call it as a root domain name server. So ये .com के आगे भी एक dot रहता है, which is a root server. So डीएनएस रिजॉल्वर सो डीएनएस रिजॉल्वर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है तो भी जस्ट कीप इट असाइड एंड जस्ट focus on this. There is a DNS resolver. That's it. I'll explain it later on. So DNS resolver will first go to the root server because we have one hidden dot here after .com. So this root server will tell that yes, your address has a .com. It means all the .com domains has their IPs. That means Internet Protocol addresses, IP addresses hosted at some point, which are hosted at name servers, but uh, in your request address there is a .com. So first go to .com and ask for a my page. So this root server will just identify your domain, whether it is .com, .net, .org, .in, and so on. So it will just identify domain name and it will ask your browser to go to this .com server. So TLD server. TLD means top level domain. So in this case, a top level domain is .com. So suppose if I do this mypage.net, mypage.in, mypage.org. So org.net.in.com, these all are called as TLD. Please note it down because you have to answer a quiz tomorrow or any time after tomorrow. So this TLD stands for top level domain server. So this root server will identify which domain is this and it will redirect your browser first to this TLD server. So your browser will come here, takes an IP address of this TLD server and it will ask the same thing to resolve this mypage.com to this TLD server. सो टीएलडी सर्वर में माय पेज डॉट कॉम का रिकॉर्ड छुपा हुआ है तो वो वहां पे जाएगा एंड इट विल आस्क वेयर इज दिस mypage.com is hosted. Now the TLD server will return a name server. So what is name server? We'll see it in the next chapter, but just keep it in mind that TLD will give the information of name server, right? And with the name server, suppose now your college website is tkthakurcollege.net. So first root server will redirect your browser to the TLD server of .net. Then .net will give one mid. It means एक agent के पास जाएगा which is called as name server, which हम इसको DNS कहते हैं, DNS sir. So it will go to the DNS hosted by this tkthakurcollege.net and it will ask this DNS server that where my website is hosted. So what is DNS? DNS means domain name server. So domain name server is such a list of records where we can bifurcate different protocols. Suppose your principal has email ID principal @ ck thakur college.net. So I'm sending a mail or might be I'm trying to fetching a website. So when I'm hitting my browser address at ck.thakur.college.net, at that time I'm requesting for a website. When I'm sending email at
principal at ckThakur.net, ckThakurcollege.net. At that time, I am sending an email request. So there are two different kind of requests. There are many other requests as well, but right now we will focus on just this two requests. One is mail server request and another is web page request. So so the domain is same, but I am asking two different things. So this DNS, so name servers, that means DNS server will understand this. तो root server को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना TLD server को फर्क पड़ता है whether it is mail or whether it is web page. It will just redirect you to the DNS server. Now DNS server will understand what you are asking for. So suppose if I am asking for a website, then DNS server will say, this is the IP address. On this IP address, your website is hosted. So now the browser is going to the real server using the fourth IP address. First, it will go to the root server IP, then it will go to the TLD IP, then TLD DNS का IP देगा, then ये DNS का जो IP है, ये हमें real server का IP address देगा, and then the browser will go to this real server and asking for mypage.com. Then what happens we'll see in the next chapter. So is it clear to you all? And suppose if I'm composing an email to principal@ckThakurcollege.net, it will go through all of the same things, and then suppose I'm hosting emails at Gmail server. So website is hosted at my server. But suppose if mail that is MX, that is mail exchange record. So suppose I am hosting my mails at Gmail server. So in that case, this DNS will redirect me toward Gmail server, not with this hosting server. So there is difference between mail server and hosting server. Hosting server means a server which is hosting a web pages or maybe a website. It is a hosting server. So this way, uh, when my browser is asking one thing, it will go to three servers: root server, TLD server, DNS server, and then it will reach to the real server. So this is the thing which is happening in the backend or in the background. So browser does it all, and then it resolves the website. So is there any doubt in between this? Anyone? Is it clear to you all? Kavish, Sanket, please someone reply. Yes, sir. Okay. So then there is one more component which is registry. What is registry? So when we say there are so many domain names like .com, .net, .org, .in. So you might have heard a name of this website, GoDaddy. Heard? Heard this name before? Yes. Yes, Yeah. sir. So if you want to make your website live, you might go and book your own domain name like sandeepkakade.com, or I might book a domain saurabhkarve.com like this. So we can go to Namecheap, we can go to BigRock, we can go to GoDaddy, and we can register a domain name. But finally, GoDaddy, Namecheap, there are so many players in the market which can make these domain names available for anyone, right? But it doesn't mean that BigRock or GoDaddy are the final owners of this .com or .net domain names. It is not that. So there is a word registry. So there are registries exist, like .in domain is India's domain name. So .in has total control, or it is controlled, or it is regulated by the Indian government. So Indian government is the registry for .in domain names. That way, .com, .net, these two domains are private domain names, and there is a company called VeriSign Public Limited, which is a America-based company, and they own these two domain names, which are .com and .net. Fine. So they appoint registrars like GoDaddy, Namecheap, or you might become a registrar for these things, and then you can allow your registrants to register a domain owned by VeriSign using your platform as your role is registrar. Is it clear? Should I explain it one more time? Is it clear to you all?
Okay, I'm assuming that it is clear. So uh, now, so there are so many registries available across the globe. So now here, uh, understand one thing. There are so many domain names like .in, .com, .net. So when your domain has just two letters, like .in has two letters, .co नाम का एक domain है, it has two letters. Then there is a domain called US or EU. EU means for Europe, it is EU or UK का सिर्फ UK is one domain. So when your domain has just two letters, now there are so many domains like co.in. So when we say www.ckthakkurcollege.co.in, it means the final domain which is called the TLD, that is top level domain is again .in. So co.in is a subdomain of .in registry. It has to be very clear. So for .co.in there is no different registry. So the backtrace process is always same. .net has .co.in domain. So that means .co.in is a part of .in registry. All the way we are treating this as a different domains. It doesn't matter how much subdomains you are connecting to using dots. It doesn't matter. But this has to be very clear. So when your domain has just two letters at that time, always understand that these all domain names are known as country level domains. So it is called as CCTLD, country code top level domains, CCTLD. Please note it down. And then there are domains like .com, .net, which has more than two letters, three letters, or maybe beyond it. Now there are so many domains like I can book a website like Saurabh.website, or it might be Saurabh.site, or it might be Saurabh.tech, that way. So my own company name is SkyQ Tech Private Limited. So our website is now skyq.tech. That's it. So that tech is also a privately owned registry, just like VeriSign. So .net, .com are hosted by the VeriSign, but these domains like .tech, .edu, dot uh, .website, .site, and so on. These all are this all TLDs which has more than two letters are privately owned registries. So is it clear? Any doubts on this? No, sir. Okay. So now the concept of virtual host. So when this all backtrace is happening like this, and suppose this server has more than 100 websites hosted on just one server. Then finally, my browser is coming or asking or requesting a website from this server only. So how this server can bifurcate that suppose 100 websites are there, then which website is hosted where? So the concept called as virtual host, that means uh, when when we are hosting more than one website to one server, we have to maintain this record somewhere that virtualhost1.com is also on this server. So DNS server will reach out to the same server for virtualhost 1, 2, 3. Virtual host means it might be google.com, it might be facebook.com, it might be ckthakkurcollege.net. So suppose if we assume that all of these three sites, Google, Facebook, and your college website is hosted on single server, how this server will respond? Suppose, so when I'm requesting that I want to resolve this website www.ckthakkurcollege.net, at that time this server should respond me back something, correct? So the this record is called as virtual host. So there is difference between virtual host and virtual server. So even one virtual server can host more than 100 or maybe beyond of that number virtual host on single node, or maybe in its own memory. So when I'm requesting for virtualhost1.com, then DNS will redirect me to this one web server, and this one web server will then see
whether this website is hosted on my memory or not. Suppose it is there, then it will see from which folder should I respond. So suppose this three websites has three folders somewhere in their hard disk. So on the server end configuration, so you might heard the name Apache, Tomcat, and then node server. Then there is active server pages like ASP. For that, that is also .NET server is required. So all of these servers will maintain this kind of records of the virtual host, and it will respond whatever the data hosted in this folder as a response for this website. Is it clear to you? Should I explain it once again? Is it clear? Rutuja, Adinath, Pragati, is it clear to you? Yes, sir. Okay, all right. So this is how the virtual host works. Again, we'll see how the domain resolves. So when browser is asking for the HTTP request, it will first go to the root server. Root server बोलेगा इसके पास जा. तो ये root server will responds to the web browser. Then web browser will go to TLD server. Then TLD server will say go to the name server. So ये वापस response करेगा browser को. Then browser will again go to the name server. Name server will bifurcate that go to hosting server. Then it will respond to this. Then again it will go to the hosting server. Hosting server भी एक response करेगा. तो वो जो response करेगा ना, that is called as HTTP response. And that response is nothing but your HTML code. So when we design a web page, we are working on HTML and CSS. So your browser always receives a HTML code and CSS code as a response. And then your browser will paint a web page. We call it as a painting, which is the concepts are FCP and LCP. FCP means first contentful paint and LCP means last contentful paint. We'll see this concept later on. But when your browser receives one HTML code and basic जो उसका ढांचा खड़ा करता है ना, the basic structure it paints, it's called as FCP. First contentful paint. Please note this down, all of these things. I'm purposely not putting up these things in this browser. Hello, whether I'm connected or disconnected. Sir, Hello. disconnected. Okay, 1 second. Connected. Please send me a messages when I'm disconnected. Okay. So should I explain this once again? कहाँ तक तुमने सुना है? Please let me know. First contentful paint. Okay. So HTTP response तक सुनाई दिया था सब कुछ? Yes, sir. Okay, so when your browser receives an HTML code as a response, then HTML is nothing but the structure. Human body में जो bones है, so bones दिखते नहीं है but होते हैं, right? So we call it as a structure of the body, and then CSS से हमारा hair का color आता है, eye का color आता है, skin color आता है, and so on things. So this is the best example of the HTML and CSS. So same thing यहाँ पे होता है. When we see a website, there is a header menu which has a logo, navigation bar, and so many things are there. So the structure of header, when we decide then that header should be here, then there should be a sidebar, then there should be a content bucket. So these all things are being decided using HTML. And then so the structure gets painted first. We call it as a FCP, but first contentful paint. So then CSS get into the role, because CSS is also when many websites today are hosting the CSS externally. So when the HTML code
results, or when your browser receives an HTML code, it will first understand where is the header, where is the footer, where is the sidebar, and where should I paint it. And then, as a part of the CSS, that is cascading style sheets, so अभी उसको styling कैसा करना है इसका, इसके understanding के लिए many websites are using CSS, and many times the CSS are externally hosted. So again, browser has to make a request to receive the CSS file. So when browser makes this CSS file request just after the FCP, fine, and once it receives the CSS code, it starts painting the final web page. So once the web page is fully painted and fully loaded, we call the last uh, styling things when it is happening, we called it as a LCP, that is last contentful paint. Is it clear to you all? So yeah, the web browsers, how it works, that I already have explained. What is web browser? We are just taking it up just to clear the concept, nothing else. So web browser is a software application that allows users to access and navigate the World Wide Web, which is triple W. It acts as an interface between the user and the information available on the internet. So now the web page has an information, correct? So now how it get results that we saw in the last slides. So what is the role of web browser? Is just to fetch the web pages and paint it so that final user which is requesting this can able to read it, to make it readable or make it more understandable, or maybe a presentable. It's a role of the browser. So browser's main role is to understand the HTML and paint it. We call the process of whole painting thing as a rendering. We'll call it as a rendering. So this is the main process of the web browser. Fine. Any doubt in this? ये कैसे काम करता है? मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ रैंडम, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो. देन देर इज अ डीएनएस ट्रेस. अभी ये सब प्रोसेस कैसे होता है, ये सब ज्ञान दे ऐसे ही बक रहा हूं मैं. So, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसको आप देख सकते हैं. इस द प्रोसेस इज नोन एज डीएनएस ट्रेसिंग. सपोज इफ यू वांट टू सी कि google.com कहाँ पे होस्टेड है, और ये जो मैंने अभी सब कुछ जो आपको बताया अभी, तो ये एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, तुम्हारा ब्राउजर कैसे काम कर रहा है. द प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनएस, दैट इज डोमेन नेम सर्वर ट्रेस. फाइन. सो जिसमें मिलता क्या है कि पूरा पाथ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. आई टेल दिस हाउ दिस हैपेंस. One second, let me stop sharing my screen and let me share it once again. So okay, so now this is DNS tracing. मेरा screen visible है? Yes, sir. Okay. So there is a website simpledns.plus. Now see this. Dot plus ऐसे domains अभी use कर रहे हैं लोग. सबको तो .com .net यही पता थे. लेकिन now there are domains like this .plus .tech. So note down this website simpledns.plus / lookup -dg. Fine. So now I'm requesting a trace DNS delegation for your website ckThakurcollege.net. So अब ये trace कैसे हो रहा है देखो. Now first it is going to this root servers. Sorry. So ये root server पे इतने IP address के root servers are available, ABCDEFGHIJKLM. यहाँ तक दिख रहा है सबको? These many root servers are available. इसमें से कोई भी एक रैंडम या कोई भी दो सर्वर को वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा. अगर इन्होंने नहीं सेंड किया तो अगले दो को भेजेगा, अगले दो को भेजेगा. दैट वे इट वर्क्स. सो इन दिस केस इट इज सेंडिंग रिक्वेस्ट टू फर्स्ट रूट सर्वर जिसका आईपी एड्रेस ये है. तो इसके साइड से हमें रिस्पॉन्स क्या मिला? .net.
अभी हम कौन सा वेबसाइट पूछ रहे हैं, ckठाकुर.net। सो .net रजिस्ट्री कहाँ पे होस्टेड है, उसका हमें इंफॉर्मेशन मिला। सो ये कहाँ पे होस्टेड है, इसके GLTD सर्वर से। GLTD मीन्स ग्लोबल TLDs, ग्लोबल टॉप लेवल डोमेन्स। सो GLTDs। एंड मैंने क्या बताया, CCTLDs विच इज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन नेम्स। ये सब याद करो, ये सब नोट डाउन करो, मैं किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो प्लीज लेट मी नो। अगर आप 10 बार मुझे पूछोगे मैं 10 बार आंसर दे दूंगा, बट I want you to clear all of these things. Is it clear to you? So there are so many servers, EFMI. There are random servers which are responding this thing. Again, now browser has asked this IP address। यहाँ पे वो गया और ब्राउजर ने पूछा कि ये मुझे चाहिए। तो इसने बताया मुझे ये CK ठाकुर कॉलेज के बारे में पता नहीं, .NET कहाँ पे होस्टेड है मुझे पता है, ये ले लो, ये कोई भी, ये इतने आईपी एड्रेस है, इसमें से कहीं पे भी जाओ। तो इसमें से नाउ दिस आईपी एड्रेस इज BGLTD सर्वर। यहाँ इसके पास वो गया ब्राउजर, वी कॉल्ड इज कॉल्ड इट एज अ GLTD सर्वर्स। यहाँ पे किधर गया, वो रूट सर्वर्स के पास। देन इट वेंट टू GLTD सर्वर्स .NET। सो इसके पास जाने के बाद उसने क्या बताया कि नाउ इट इज आस्किंग फॉर द DNS सर्वर्स। सो इसमें से ये सर्वर ने, इतना लिस्ट आया था उसमें से ये वाला जो सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस हमें दिख रहा है, इसने रिप्लाई किया कि हाँ मुझे पता है ckठाकुर.college.net कहाँ पे होस्टेड है। ठीक है। सो वेदर आई एम कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah. So it went to this IP address and it has responded now this two name servers. Now see this name servers क्या है, ये दो name servers है। NS means name servers 3 and 4। Now suppose अभी इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। नेम सर्वर का कंसेप्ट क्या है? सो व्हेन वी से, हम हमारा जब एड्रेस बताते हैं, हम अगर कोई कनाडा में रह रहा है जो इंडिया में कभी आया भी नहीं है ना, उसको कभी कुछ पता भी नहीं है, व्हेन वी टेल आवर एड्रेस की पनवेल, देन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, Maharashtra, India, and when we say 410206, at that time also now this 410206 is only known thing for internet and the postal services, right? So how the human brain works? It will first take out the map. It will first zoom on the India. Then it will take the second argument, which is Maharashtra. It will zoom on the Maharashtra, and then it will start finding a Panvel. Correct? तो यहाँ पे तो हम आ गए। तो व्हेन दिस सर्वर इज सेइंग दैट मुझे पता है ckठाकुर.college.net कहाँ है, इसका मतलब हम वो पनवेल तक आ गए। अभी हमें वो, देर आर सो मेनी रोड्स विच कैन विच कैन रीच दिस कॉलेज, राइट? अभी हमें कॉलेज का फिजिकल एड्रेस देना है, तो हम एड्रेस बताएंगे तो भी वहां पे आने वाले रास्ते बहुत सारे हैं। करेक्ट? सो जितने रास्ते वहां पे आ रहे हैं, अभी यहाँ पे ये दो रास्ते हैं जो यहाँ तक जाते हैं, विच आर नेम सर्वर्स 3 एंड नेम सर्वर 4। वी कैन say that name servers are nothing but the roots of the website. Roots means not ROOT root, it is ROUTE root. You know the difference between root and route, right? So these are the routes. Name server means the routes of your website. So these are the name servers. Again, this name servers is just like the domain name which we are requesting. So अभी ये कहाँ है हमें पता ही नहीं है. So then we'll start attempting to resolve this name server. So this name server is nothing but the uh, domain name which is like ckठाकुर.net or it's just like a google.com. So इसमें से मैं पहले ये नेम सर्वर रिजॉल्व करूंगा। इसने अगर मुझे भाव नहीं दिया, इसके पास अगर बैंडविड्थ नहीं है, ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाया, देन आई विल गो टू द सेकंड नेम सर्वर। बट फॉर्चुनेटली इन दिस केस वी कैन एबल टू रिजॉल्व दिस DNS एंड इसने मुझे ये आईपी एड्रेस रिटर्न दिया है। नाउ दिस इज द फाइनल आईपी एड्रेस वेयर द browser understood that this website is hosted on this IP address, right? So अभी उसने क्या किया, ये आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट भेजा।
अभी ये आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट भेजा, मतलब क्या कि ये नेम सर्वर पे, मतलब ये डोमेन पे मैंने ये आईपी का रिक्वेस्ट भेजा, और मैं इसके पास गया और ckThakurCollege.net ये मैंने पूछा। अभी इसका मुझे ए रिकॉर्ड मिला। ए रिकॉर्ड मीन्स एड्रेस रिकॉर्ड। नाउ व्हेन वी से डीएनएस, डीएनएस हैज सेवरल रिकॉर्ड्स, जैसे मैंने मेल का एग्जांपल दिया एंड वेबसाइट का एग्जांपल दिया। सो वेबसाइट, where the website is hosted, we can able to find out the IP address for website, the record called as a record. Okay, so now you must know the difference between IP version 4 and IP version 6. Is there any doubts in between IP version 2 and 4? Any doubts for this? So IP version 6 is much more like a MAC ID of your computer. So suppose if I'm using IP version 6, at that time a record can host a record can contain only IP version 4. Suppose if I want to host IP version 6 as the final record, I have to use AA, that is A for the 4 times. So AA record. So just keep in mind as a reference. Just just remember this record, A record. A record means address record. Fine. So और मे बी इसको इसके रिस्पॉन्स को AA कहता है, दैट मीन्स ऑथोरेटिव एड्रेस, मतलब यहाँ पर ही है। So when it is response and when this website resolves, we call this record as AA record, that is authoritative address record. So वो authenticate हो गया, so that's why it is authoritative address record. So this is a record. Now आप ये जैसे वेबसाइट नोट डाउन कर रहे हो, वैसे और एक वेबसाइट नोट डाउन करो, whatsmydns.net. नोट डाउन दिस वेबसाइट whatsmydns.net. तो व्हेन यहाँ पे देर आर सो मेनी रिकॉर्ड्स, जो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें इतने टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। ए रिकॉर्ड, AA रिकॉर्ड, देन सी नेम रिकॉर्ड, सी नेम मीन्स कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड, MX record, which is mail exchange record, then NS record, that means again name server records. It is also part of DNS. Then PTR means pointer record, इसको छोड़ दो। SOA is a SOC record, इसको भी छोड़ दो। SRV is a service record, इसको भी छोड़ दो। Then there is a TXT record. TXT means text record. मतलब मैं अगर कह रहा हूँ ckThakurCollege.net ये मेरा डोमेन है, तो हाउ आई कैन प्रूव दिस, मतलब जीमेल में जब ये इसका मैं ईमेल्स अगर होस्ट कर रहा हूँ जीमेल में, तो जीमेल मुझे कहता है प्लस फर्स्ट प्रूव योर आइडेंटिटी। तो उसके लिए मैं मेरा वेबसाइट तो नहीं बंद कर सकता। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ऐड वन प्लेन टेक्स्ट रिकॉर्ड। मतलब हमारे फोन में ओटीपी आता है, तो अगर मैंने ओटीपी वो बताया विच इज वैलिड फॉर जस्ट 2 मिनट्स, तो अगर 2 मिनट में आप वो ओटीपी बता पाए, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो फोन आपके ही पास है। इट इज जस्ट लाइक अ ओटीपी। सो गूगल हमें एक रैंडम ओटीपी जैसा एक नंबर या फिर कोई एक रैंडम वर्ड्स का एक स्ट्रिंग देता है और कहता है कि आपके ये डोमेन के टीएक्सटी में ये वर्ड इंसर्ट करो। सो व्हेन वी इंसर्ट दोज वर्ड्स इनटू द टीएक्सटी रिकॉर्ड, एट दैट टाइम वी एबल टू सी कि क्या टीएक्सटी है, एंड गूगल भी जान जाता है कि इट इज वेरीफाइड। अगर मेरे पास वो सचमुच डोमेन है तो आई कैन ऑब्वियसली एबल टू टेक्स्ट और सेट द टीएक्सटी रिकॉर्ड, अदरवाइज आई वुड नॉट। नाउ ckThakurCollege.net ये डोमेन मेरे पास नहीं है, तो आई कैन नॉट एबल टू चेंज द टीएक्सटी रिकॉर्ड फॉर दिस डोमेन नेम। माइट बी इसका वेबसाइट होस्टिंग मेरे पास है, बट डोमेन का कंट्रोल मेरे पास नहीं है, तो आई कैन नॉट सेट द टीएक्सटी रिकॉर्ड। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमें फाइनल एक आईपी एड्रेस मिला था विच इज 31.220.92.147। सो व्हेन वी आर लुकिंग अप फॉर a record which is address record for this, again सेम आईपी मुझे रैंडम डेटा सेंटर से आ रहा है। यहाँ पे अमेरिका में से 5 लोकेशन से कुछ रैंडम डेटा सेंटर्स है, देन देर इज वन डेटा सेंटर फॉर फ्रॉम कनाडा एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें हमारे पास इंडिया का एक होस्ट सेंटर है, वहां से भी हमें यही आईपी मिल रहा है। करेक्ट। सो ऐसे हम जान सकते हैं। नाउ सपोज इफ आई एम आस्किंग फॉर द एमएक्स रिकॉर्ड,
यू विल अंडरस्टैंड। ये देखिए, google.com। अब ये आगे क्या है छोड़ दीजिए, लेकिन ये google.com पे होस्टेड है। नाउ दिस वे आप कोई भी दुनिया के डोमेन्स के डोमेन मतलब वेबसाइट कौन से आईपी पे रजिस्टर होस्टेड है, एंड मेल कहाँ पे जा रहा है, ये सब चीजें आप यहाँ से पता कर सकते हैं यूजिंग व्हाट्स माय डीएनएस। एंड आपका ब्राउजर बैकग्राउंड में क्या करता है उसका ट्रेस अगर किसी को जानना है प्रैक्टिकली, सो इट इज डीएनएस डेलीगेट ट्रेस डीएनएस। ठीक, इज इट क्लियर टू यू ऑल? अभी इसमें कुछ डाउट्स है? No. एनीवन? ओके, No, sir. ओके, देन देयर इज अ लास्ट कंपोनेंट which is who is। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा। या ओके, तो नोट दिस वेबसाइट who डॉट इज। ठीक है, ये वेबसाइट को नोट डाउन कर दीजिए, who डॉट इज। नाउ इन दिस केस is the domain name, so when we have just two letters it means this is associated with some country, so if we google it, dot is country, इतना डालेंगे तो हमें समझेगा कि ये जो डोमेन है ये है आइसलैंड का डोमेन है। ठीक है, दिस वे वी कैन, अभी डॉट ए आई करके डोमेन है विच इज फेमस, ए आई ये वर्ड अभी बहुत फेमस है, तो ए आई का कंट्री अगर देखेंगे 2 लेटर्स का ही है। सो एंगुलिया का नाम का क्या है यहाँ, एंगुला नाम का कोई कंट्री है ब्रिटिश ओवरसीज में जिसके पास ये डोमेन है। फाइन, जिसका ये डोमेन है। सेम वे इफ वी सी डॉट इन कंट्री, obviously it is India, correct? So this way you can able to find the owner of the domain name, owner country of the domain name this way। Now if we see ये कॉलेज का क्या ये था, हाँ। Now who is, मतलब मुझे जानना है कि ये डोमेन किसने रजिस्टर्ड किया है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो मैं ये जान सकता हूँ। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड हु इज। सो इसका ये शॉर्ट वेबसाइट है विच इज हु डॉट इज। यहाँ पे कोई भी डोमेन आप डालेंगे तो पहले समझेगा कि रजिस्ट्रार कौन है, मतलब कौन से वेबसाइट से इसको रजिस्टर किया है। सो इट इज पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री डॉट कॉम। सो पीडीआर लिमिटेड करके कंपनी है जिसने जिस वेबसाइट से डोमेन बुक किया गया है। देन व्हेन इट इज एक्सपायरिंग ऑन 13 December 2024 and it was registered in 2005। So 2005 से it was registered and अभी जैसे 13 December को इसको renew किया है, that's why it is saying updated on this date and it is expiring next year। तो इससे पहले ये अगर खत्म हो गया और इन्होंने रिन्यू नहीं किया तो ये डोमेन को हम भी क्लेम कर सकते हैं। सो दिस वे इट वर्क। इसका नेम सर्वर्स ये दो है और किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, डॉक्टर एस टी गडाडे गड्डे सॉरी। तो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनका ईमेल आईडी क्या है, इनका फोन नंबर क्या है, दिस वे देर आर सो मेनी डोमेन नेम्स जिसका अभी ज्यादा करके डोमेन्स का ये इंफॉर्मेशन इतना पब्लिक नहीं रहता है, बट या देर आर सो मेनी डोमेन नेम्स जिनका ये अवेलेबल रहता है पब्लिक डेटा, बिकॉज व्हेन वी रजिस्टर्ड अ डोमेन नेम हमें एडवर्टाइजिंग कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो इवन वी रिकमेंड आवर कस्टमर्स टू मेंटेन द प्राइवेसी, उसके लिए कुछ 100-200 रुपया ज्यादा पे करना पड़ता है, बट वी ऑलवेज रिकमेंड इट बिकॉज उसके बाद बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कॉल्स आते हैं। तो अभी इन्होंने ये किया नहीं है तो ये फोन नंबर पे आई एम डैम श्योर बहुत सारे कॉल्स जाते रहेंगे कि आपको वेबसाइट बनाना है क्या, आपको होस्ट करना है क्या, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो दिस वे दिस हुइज का प्रोसेस होता है। तो समझा सब कुछ ये? वी वेंट थ्रू 11 स्लाइड्स। एनीवन हैज एनी डाउट्स इन दिस? एनीवन हैज एनी डाउट्स? अच्छी बात है, चलो अभी कैमरास ऑन करो, अभी मैं मेरे डाउट्स पूछता हूँ। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड, सबको सुनाई दिया प्रॉपर? Yes, sir. किसी के पास कुछ चीज लैग, कोई लैग भी हो रहा था किसी के पास? मतलब कोई पार्ट सुनाई नहीं दिया, ऐसा कुछ है? इज इट देयर? ओके, तो चयन भाई कैमरा ऑन करो। Then प्रगति, यश, योगेश्वर, कैमरा ऑन करो। लैग हो रहा क्या? है क्या? क्या पता। होने दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन को स्विच मारो नहीं तो। अच्छा, शयन आर यू देयर? ओके, सो टीएलडी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? मैं ही पूछूं ये? कोई बता सकता है? किसी को रैंडम को पूछूं मैं? सर टॉप top लेवल। level domain. गुड, वेरी नाइस। व्हाट इज रूट सर्वर्स? ऋतुजा, व्हाट इज रूट सर्वर? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग आएगा ना, बता तो दो। और क्या हो सकता है? भावेश, व्हाट इज रूट सर्वर? Root server is name server. Uh, अच्छा, किसी को आ रहा है तो बता देना। कोई बता सकता है व्हाट इज रूट सर्वर? आदिनाथ, बता सकते हो? चैन भाई, एटलीस्ट माइक तो अनम्यूट करो। वो ब्राउजर में सर्च करने के बाद फर्स्ट रिक्वेस्ट रूट सर्वर पर जाता परफेक्ट परफेक्ट, बट व्हाट इज रूट सर्वर? उसका है। काम क्या है? मतलब रूट ब्राउजर रूट सर्वर के पास जाता है, इट इज परफेक्ट। आगे क्या होता है? रिक्वेस्ट मतलब से जो रिक्वेस्ट आई है वो चेक कर ले कि जो सर्चिंग किया हुआ है वो उसका एड्रेस या फिर उसका लोकेशन क्या है, वो मतलब किधर है स्टोर। नहीं, शुड आई रिपीट द प्रोसेस? वापस दिखाऊं वो स्लाइड? डोमेन नेम ये करता है सर, आईपी एड्रेस रिसॉल्व करता है रूट करेक्ट। सब। या, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, वन सेकेंड। आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हो क्या कुछ? ओके, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करूं, एक सेकेंड। ये दिख रहा है या जूम करूं? ओके, तो पहले ब्राउजर जाएगा, अपने कैशे में देखेगा। इफ इट इज अवेलेबल, यस, देन वो एज इट इज पेज को रिजॉल्व करेगा। इफ नो, अरे यार मेरे पीछे से ना बहुत नॉइज है आज, आपको बहुत आवाज आ रहा है क्या पीछे से? सर नहीं आ रहा है हाँ आवाज। सर, कुछ भी आवाज नहीं नहीं आ आ रहा है रही। ना? हाँ ठीक है, नहीं आ वॉइस रहा। आइसोलेशन इज ऑन, ओके फाइन, ठीक है। सो सपोज द फाइल्स आर देयर होस्टेड इन द कैशे, सो वो कैशे से रिटर्न करेगा। इफ नॉट, देन इट विल गो टू द इंटरनेट एंड पहले जाएगा रूट सर्वर के पास। ठीक है, सो रूट सर्वर को पूछेगा कि टीएलडी कहाँ पे है भाई? टीएलडी का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? संकेत, भावेश? टॉप टीएलडी, लेवल डोमेन। टॉप परफेक्ट। लेवल डोमेन। व्हाट इज, हाँ ये हो गया फुल फॉर्म, मतलब क्या है? टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है? ये फुल फॉर्म हो गया टीएलडी। एग्जाम्पल बताओ, चलो मतलब नहीं, एग्जाम्पल बताओ। इट्स अ पार्ट ऑफ यूआरएल। नो, यूआरएल मीन्स डोमेन के आगे जो आता है ना स्लैश स्लैश करके, दैट इज कॉल्ड एज यूआरएल। सो टॉप लेवल डोमेन मीन्स डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओआरजी, ये सारे हो गए टॉप लेवल डोमेन्स, टीएलडी। एंड टीएलडी में कौन से दो टाइप्स है, आप कोई बता सकता है? देर आर टू टाइप्स ऑफ टीएलडीज।
वन इज CCTLD, दैट इज, अभी ये सब नोट डाउन कर लेना, मैं कल पूछने वाला हूँ. वन इज CCTLD, दैट इज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन. जो डोमेन में सिर्फ डोमेन मीन्स when we are hitting a website skyq.tech or it may be google.com. so .com .tech .net .org ये हो गया TLD. अभी ये TLD में दो ही लेटर है तो इट इज कॉल्ड एज CCTLD, दैट इज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन. क्लियर? ओके. एंड व्हेन it has more than two letters, it is a private TLD. इसको बोलते हैं GTLD, इट मीन्स ग्लोबल TLD, ग्लोबल टॉप लेवल डोमेन. ठीक है, तो ये रूट सर्वर भेजेगा उसको, ब्राउजर को बोलेगा कि भाई .com के TLD सर्वर पे जा. तो फिर वो एड्रेस पे वो वापस रिक्वेस्ट भेजेगा, मुझे cktakur.net चाहिए. तो फिर वो उसको DNS के पास भेजेगा. फिर वो चला जाएगा DNS के पास कि वेयर इज cktakur.net, cktakurcollege.net. सो फिर वो उसको पूछेगा कि आपको मेल डिलीवर करना है या वेबसाइट देखना है, आपको क्या चाहिए. देन इट विल आस्क कि हाँ मुझे वेबसाइट देखना है. तो फिर वेबसाइट देखना है तो ये आईपी पे जाओ, अगर मेल डिलीवर करना है तो ये आईपी पे जाओ. सेम अगर जब जब हम CK ठाकुर कॉलेज के गेट पे आते हैं तो पूछते हैं ना वॉचमैन लोग कि वेदर यू आर स्टूडेंट और पेरेंट. अगर पेरेंट है प्रिंसिपल के पास जाना है तो यहाँ जाओ. इफ यू आर अ स्टूडेंट देन कौन से क्लास में जाना है तो सेकंड फ्लोर पे यहाँ यहाँ जाके ये क्लास में बैठो. इट इज जस्ट लाइक दैट, दैट इज DNS मीन्स इट वर्क्स लाइक अ वॉचमैन, मोर और हाउ. सो ये क्या करेगा DNS, पूछेगा तुम्हें कहाँ जाना है, मतलब CK ठाकुर तो तुम आ गए हो लेकिन यहाँ पे कहाँ जाना है तुम्हें. सो इट विल सेंड योर ब्राउजर अगेन टू द रियल सर्वर. और रियल सर्वर में भी जाके अभी प्रिंसिपल ऑफिस पे आप आ गए तो भी वो पूछेगा ना कि यहाँ पे आ गए हो, प्रिंसिपल को मिलना है या फिर ये बाजू में कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पे किसी को मिलना है. करेक्ट, मतलब वहां पे और भी लोग बैठते हैं तो एग्जैक्टली किसको मिलना है. तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो क्या करेगा, अंदर जाके बोलेगा कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, इनका नाम ये है. तो फिर वो बोलेंगे ना थोड़ा टाइम बैठो, या फिर वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठो सम, और मेरे फिर अंदर ऑफिस में आओ, समथिंग लाइक दिस. सो इट इज जस्ट लाइक अ वर्चुअल होस्ट. इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट है इसमें? संकेत क्लियर है? सो व्हाट इज रूट सर्वर एंड इसको ट्रेस करने का वेबसाइट कौन सा है? DNS ट्रेस. DNS ट्रेस तो प्रोसेस है, वेबसाइट कौन सा है? मैंने बताया था इसको, नोट डाउन कर लो. इट इज सिंपल DNS डॉट Simple प्लस. DNS dot करेक्ट. ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए यही यूज करो ऐसा नहीं है. यस जोगेश्वर, कुछ कहना चाहते हो? लोकेंद्र, आदिनाथ, प्रगति, यश, कुछ डाउट्स है? no problem. ओके. अरे ये बंदा कौन है रे, ये कौन है, कौस्तुभ तांबड़े, कौन है ये? ये क्यों नहीं आ रहा है? प्लीज आस्क हिम. उसको बोलना ऐसे मत करना, क्योंकि कल से तो मिस किया ना तो कुछ नहीं समझेगा आगे जाके, कुछ फायदा नहीं है फिर. प्लीज आस्क सर हिम. सर मे बी ये त्यांचे मॅच चालू आहेत. अच्छा, ही इज ऑल्सो क्रिकेट यार. ओके ओके ओके. कोई दोस्त है, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम. उसको बोलना एक बार मुझे कॉल करने के लिए जब भी वो फ्री होगा. ओके सर. ठीक है. या ओके. सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? डन.